रिकॉर्ड करून घेऊया. सो फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल आई टेक इट इन हिंदी. सो बहुत लोगों से जब मैंने बात किया तब मुझे ये समझ में आया कि कैश फ्लो का प्रॉब्लम है जब आप क्लिनिक में काम करते हो. कि बहुत सारे लोगों का जो क्लिनिक है वो मेजरली प्रोप्राइटरी बेस्ड है. तो खुद ही ओनर है, खुद ही वहां पे कामगार भी है, और खुद वो पैसा लेके जाना भी चाहते हैं घर. और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप ये ध्यान नहीं रखते कि कितना मेरा पैसा है और कितना क्लिनिक का पैसा है, ये जब तक आइडेंटिफाई नहीं होता तब तक उसमें मिसमैनेजमेंट चलता है. कई लोगों ने तो मुझे मेरे साथ ये शेयर किया कि जब पैसा क्लिनिक में आता है तो मुझे लगता है ये मेरा पूरा प्रॉफिट ही है. तो खर्चा होता है वो इमीडिएटली, क्योंकि वो मुझे लगता है पूरा पैसा है. बाद में ध्यान में आता है कि उसमें लैब का पैसा देना है, कंसल्टेंट का पैसा देना है, डिस्पोजेबल का बिल आता है. तो हर महीना ये टसल चलता है कि कहाँ से कैसे एडजस्ट करे पैसा और कैसे दे. तो पैसा तो मैं बहुत कमा रहा हूँ, कमा रही हूँ, लेकिन हाथ में नहीं आ रहा है, और हाथ में ना ही बचता है, और समझ में नहीं आता खर्चा कैसे होता है. और ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है जिनके पास कैश फ्लो का प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं होता है. दूसरी बात ये जो मैंने अंडरस्टैंड की है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स, प्रोप्राइटरी, सिर्फ प्रोप्राइटरी ऐसे नहीं, बहुत सारे बिजनेसमैन भी इसी तरीके से सोचते हैं. उनको लगता है मेरी कंपनी, मेरा क्लिनिक ही मैं हूं. They could not differentiate between what clinic is and what me myself is. तो पहले ये ध्यान में रखना है, इसका जो कंसेप्ट है ये कैश फ्लो का, पहला ये कंसेप्ट है कि यू एंड क्लिनिक आर टोटली डिफरेंट एंटिटीज. You are giving services to your clinic as a consultant and you should be paid for that. तो पहले ये ध्यान में रखना है कि यू बोथ आर सेपरेट एंटिटीज एंड यू शुड बी पेड फॉर द वर्क विच यू आर डूइंग एट योर क्लिनिक. और उतना ही आपका पैसा होगा जितना आपने सर्व किया एज अ कंसल्टेंट वहां पे, जितना आपने काम किया वही आपके पास पैसा आएगा, बाकी का क्लिनिक में रहेगा. बहुत बार ये भी मुझे लोगों ने शेयर किया है, डॉक्टर्स ने शेयर किया है, जब मैंने बात किया तब कई कई बार वो बोलते हैं कि जितना पैसा क्लिनिक में आता है उससे डबल खर्चा होता है. मुझे लगता है प्रॉफिट ही है, तो घर में भी उतना खर्चा होता है, क्लिनिक में भी उतना खर्चा होता है. तो ऐसा अगर होने लगा तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से कैसे पैसा आ जाए. और इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट बनाया जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. यहाँ पे मैंने विजिबल है सभी लोगों को? ठीक है. तो यहाँ पे मैंने दो चीजें डाली है एज अ, और ये एक्सेल शीट में एक शीट रहेगा जिसमें आपको डेटा फिल करना है, एक शीट जो होगा वो डायरेक्टली आपको रिजल्ट देगा. तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना है. तो यहाँ पे क्या आपको फिल करना है वो बताता हूँ. द फर्स्ट इज द क्लिनिक फिक्स एक्सपेंसेस. हाँ, तो क्लिनिक फिक्स एक्सपेंसेस में क्या भरना है आपको? रेंट, क्लिनिक का जो भी मेंटेनेंस का पैसा है, स्टाफ सैलरीज है, सॉफ्टवेयर चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इंटरनेट बिल है, मार्केटिंग है, जो भी है, जो हर महीना आप करते हो. तो उसमें भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है. तो एक एवरेज करके आप एक फिक्स यहाँ पे अगर डालते हो तो आपको वो क्लिनिक का फिक्स एक्सपेंसेस में आएगा. स्टाफ का कुछ उनके लिए क्या ब्रेकफास्ट आता है या स्नैक्स आता है, कॉफी आता है, टी आता है, एवरीथिंग शुड बी इन क्लिनिक मेंटेनेंस. तो क्लिनिक मेंटेनेंस में हर एक चीज आएगी. सो जस्ट राइट डाउन ऑल दी डिफरेंट, क्या उसको बोलते हैं, हेड्स with which you spend money at clinic. तो वो सब लिखो आप यहाँ पे. तो for an example, if I say that the expenses is around 45,000 a month, उसके बाद में you may keep some reserves for clinic. तो इन बीच में कभी 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 additional expenses हो जाते हैं. For that you can keep additional reserve of say 5,000 rupees a month. तो ये आपने फीड किया. दिस इज जस्ट रिजर्व्स, जहां से कुछ ना कुछ खर्चा हो सकता है आगे जाके.
यू आर नॉट श्योर कि खर्चा होगा नहीं होगा, लेकिन कभी कभी लगता है बीच में पैसा। क्लिनिक के फिक्स एक्सपेंसेस में आपका इंश्योरेंस भी आएगा, आपका पेट्रोल का एक्सपेंसेस भी आएगा, right? Because you are working as a consultant for clinic, and clinic should take care of all your requirements, all your expenses, except your personal requirements. तो यहाँ पे आपके पर्सनल रिक्वायरमेंट नहीं है, पर्सनल गोल्स नहीं है, योर चाइल्ड एजुकेशन एक्सपेंसेस, योर रिटायर एक्सपेंसेस, योर टूरिंग एक्सपेंसेस वगैरह यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है? और आपको क्या भरना है अभी इस शीट में? इट इज अबाउट कलेक्शन, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, if you get some money in cash, the how much cash you take home every day, daily basis पे आपको यहाँ पे लिखना है। And third, what you have to write is fees paid to consultant, कितना फीस आप कंसल्टेंट को पे करते हो। ये क्लिनिक का जो ऑपरेशन है उसको मैंने जो समझा उसमें देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। वन इज जहाँ पे यहाँ पे मैंने लिखा जो है इट इज अ फिक्स एक्सपेंसेस, एंड सेकंड इज अ वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो फिक्स एक्सपेंसेस में जैसे कि मैंने बताया ये सब चीजें आती है, रेंट वगैरह, मेंटेनेंस, पेट्रोल, सब कुछ उसमें आएगा, स्नैक्स, ब्रेकफास्ट जो भी आएगा सब कुछ इसमें आएगा, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, एवरीथिंग ऑन एन एवरेज आपको यहाँ पे डालना है। और दूसरा रिजर्व करके, तो दीज विल बी द फिक्स एक्सपेंसेस। वेरिएबल में क्या होगा? क्लिनिक का डिस्पोजेबल जो लगता है आपको, इट डिपेंड्स ऑन केसेस। सेकंड, लैब का जो फी, लैब का जो एक्सपेंसेस है, तो you have to find out if your practice or your collection is something around say एक राउंड फिगर लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल से 1 लाख रुपीस, सो हाउ मच वुड बी द क्लिनिक ये डिस्पोजेबल एंड लैब चार्जेस, और लैब का बिल कितना होगा? तो you will get a percentage on an average. I'm not saying that it should be what you call as the exact figure. It is not possible. So you should know how much that on an average percentage would be. And second, you are working all the time in your clinic. However, for some procedures, you ask consultant to visit to your, or consultant visits to your clinic. So how much you pay to that consultant out of the total charges for the patient? If you charge patient say 10,000 rupees, how much out of that is paid to the consultant? That proportion you should know. And these are the only two variable expenses in your clinic. Rest are the can be categorized under fixed expenses on an average basis. Correct me if I'm wrong. It is right? What I understand is right? Right. Fantastic. Thank you. So यहाँ पे you have to put your collection. Okay, so for an example 15,000, 25,000, 45,000, 1 lakh, maybe any odd figures like this. So I just populate this. So it depends on key whether month is 31st, has 31 days, 30 days, or whatever it may be. So I created it up to 31 days. So when you put this, total will be automatically done, right? Apart from that, you take some cash at home, maybe cash at home, maybe if it is required, you had taken from the kitty, immediately you have to put that in this this column. So maybe 50,000, जो भी है, I don't know, but that is something, okay? And maybe consultant charges paid, depending on procedure, you may pay it. And I recommend that always keep a what you call as a वो एक प्रोसीजर रखना कि जब प्रोसीजर होता है तभी कंसल्टेंट को उसके चार्जेस दे दो, तो ये आपको आसान बना देगा आपका काम। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन अप्रैल द कलेक्शन इज 8,60,000, you taken cash at home 1 lakh rupees, and you paid
fees to consultant 87,000 rupees. So this is your figures. Okay. Now, if you come to the next sheet, okay, this is a cash flow statement for April. Okay, so total collection is 8,60,000. Fixed expenses is 45,000. Now, variable expenses is considered at the rate of 25% in this case. Okay, so it is 25% of collection. तो यहाँ पे उसने कैलकुलेट करके दिया है द वेरिएबल एक्सपेंसेस वुड बी 2,15,000 रुपीज ऑन 8,60,000. तो ये वेरी होगा, किसी का 15% होगा, किसी का 30% होगा, किसी का 35% होगा. और यहां से ये भी समझ में आएगा आपको, जब ये फिगर्स आप सब डालते हो तो आपको ये भी समझ में आएगा वेयर यू आर रनिंग योर क्लिनिक इन प्रॉफिट्स और नॉट. तो कई बार अभी जो मुझे लेटेस्ट जो फिगर आया है किसी से, उसने बताया है कि डिस्पोजेबल का खर्चा है 35%, कंसल्टेंट को पे करते हैं 60%. माने बचा कितना हाथ में? 5%. तो ये घर में पैसा आता है बिकॉज यू आर वर्किंग एज अ कंसल्टेंट, यू आर इन प्रॉफिट. बट अज्यूम दैट एवरी वर्क इज डेलीगेटेड, आपका बिजनेस कितने प्रॉफिट में चल रहा है और उसके ऊपर टैक्सेस आएगा. तो व्हाट यू विल डू देन? आर यू ऑपरेटिंग होल? सो क्लिनिक का भी प्रॉफिट होना चाहिए. क्लिनिक ऑल्सो शुड रन इन प्रॉफिट एज वेल एज यू शुड ऑल्सो मेक मनी एज अ कंसल्टेंट. तो दिस इज अ, ये आपको ये भी दिखाएगा कि प्रॉफिट जनरेट करना है तो कितना प्रॉफिट आना चाहिए. सो वेरिएबल एक्सपेंसेस इसने कैलकुलेट किया. हियर आई कंसीडर्ड कंसल्टेंट चार्जेस एट 65%. तो यहाँ पे भी देखो 65% और ये दोनों मैंने ये किया, ऐड किया तो इट इज 90%. सो क्लिनिक इज मेकिंग 10% ओनली. सो 5,59,000 वुड बी द कंसल्टेंट चार्जेस, जिसमें आपका भी चार्जेस है जो आपके घर में आने वाला है पैसा. बाकी सब क्लिनिक में रहेगा. डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस 5,000. तो यहाँ पे क्लिनिक का इनकम हुआ 41,000 ऑन कलेक्शन ऑफ 8,60,000. क्लिनिक का इनकम हुआ 41,000. तो दिस इज क्लिनिक फाइनेंस, क्लिनिक का पैसा है ये. नाउ दिस इज पर्सनल फाइनेंस. तो पर्सनल फाइनेंस में क्या होगा? अभी ये 5,59,000 का डिवीजन है. यहाँ पे 87,000 you already paid to consultant. 1 lakh you taken cash at home. So what you can take out from clinic's account is rupees 3,72,000 in that month. So you have to keep two separate account. One is for clinic, one is for self. And all money, all collection will remain in clinic account only. What you can take out from your clinic account is this one only, your personal income, 3,72,000. यहां तक समझ में आया? Understood? Any question into this? ये सही है जो किया है मैंने? Because I am not a doctor. I don't have a clinic, इसलिए. डन सही है? कोई उसमें चेंजेस चाहिए? कोई उसमें एडिशन चाहिए? ओके, ठीक है. अभी दूसरा ये भी हो सकता है, इन बिटवीन ऑल्सो यू मे टेक सम मनी फ्रॉम द अपार्ट फ्रॉम कैश. यू मे टेक इट इन चेक, यू मे गिव check to someone वगैरह. So one discipline I suggest you to maintain, that every time you do any personal expenses, that should go from your personal account only, not from clinic account. Your all personal expenses should go from a personal account. तो कभी भी आपको कुछ ज्यादा पैसा लगता है, you can transfer that amount from clinic account to your personal account and spend from your personal account only. Right? So any amount you take in between from clinic, that would be considered as an advances. And at the end of the month, it should be settled. Every month it should be settled. Okay. Then it may happen that you are making more money than the clinic.
क्लिनिक में आस्क यू टू गिव सम मनी फॉर इट्स एडवांसमेंट और जो भी लगता है, बीच बीच में आपको पर्सनल अकाउंट से भी वहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा. दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ लोन टू क्लिनिक फ्रॉम योर साइड, एंड क्लिनिक शुड पे बैक दैट अमाउंट टू यू, राइट? और ये जब करोगे ना तो आपको और एक ध्यान में आएगा, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट डेलीगेटिंग, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट सेकंड चेयर, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट थर्ड चेयर, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट फोर्थ चेयर, आपको यहां से प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगा, आपके क्लिनिक का प्रॉफिटेबिलिटी कितना है. Because here when you put one more chair, third chair, fourth chair, there would be consultants who would be working with you in your clinic, and you are going to pay to them as a consultant charges, professional charges. So you have to make sure that something should remain in your business. Then and then only it is advisable to you to put one more chair or two chair or three chair. So in that way, you have to see that your all variable expenses and all your consultant charges should be in such a limit so that something 10-15% should remain in a clinic as a clinic's profit, even if on the work done by some other consultants apart from you, right? So this is something is there. Then fixed expenses लिखा है, variable expenses. Now clinic के income का करना क्या है? So all clinic income should be invested into liquid funds or fixed deposits, because this money is needed in short term. So you can't invest in a long-term type of investments. It should be easily liquidable assets, and it should be in a secure type of assets. So that should be kept in liquid funds of mutual funds or fixed deposits to be used for clinic upgrades and your professional education. So clinic upgrades, new machine, furniture, everything, and other development related to clinic. So this money would go from clinic's account. And what from personal expenses, from personal income is your personal goals. So here you are creating a boundary line or a great wall of, you can say, China in between your personal income and your clinic income, or personal finance and clinic finance. So here every month you will have a clarity, what is my income, how much I can spend for myself, and how much clinic would have and how much clinic can make. So you are suggested to keep two separate accounts. One is for clinic and second for personal use. If you are taking all money from the from Google Pay or all that, and cash transactions are very less, it is not recommended to go for a current account. You can have savings account only. You can have two savings account. One is for clinic, one is for personal use. When you are running a proprietary business, means it is not business, you are working as a professional. There is no need for current account to go for, unless and until you have a cash in every day you are going to uh, uh, generate cash and you are going to deposit in the bank account. If this is not the case, then you can maintain two savings account. What is the advantage of saving account? You will make some interest, because clinic account has some good amount to good amount as what you call as a balance. So average quarterly balance from your clinic account would be higher, and naturally you will make more interest into it. Current account does not yield any interest. So if you are on an average clinic क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, ऐसा कुछ उसको बोलते हैं, डेली एवरेज बैलेंस समथिंग. If it is something around 4 lakh rupees, then your current account, your savings account will yield something around 16,000 rupees in a year. So at least it will take care of your 4 months electricity bill, or maybe 2 months electricity bill. I don't know what is exact bill that you are getting at clinic. So
when you are creating wealth, you have to take care of all these, what possible profits or where you can make a possible profits. So this is what I created, and this I would like to share with you. Okay, any question into this? And this will be customized for you. These two things, one is variable expenses and second is consultant charges. So this will be customized you, and I will send these sheets to you. Okay, any questions? Would this help you? Yeah, please please बोलिए. सर मेरा एक करंट अकाउंट है और एक सेविंग अकाउंट है, बट जब मैंने डेबिट कार्ड के लिए मशीन लिया था तो उन्होंने मुझे बोला था यू नीड वन करंट अकाउंट, तो उसी टाइम मैंने वो किया था, एंड हाँ नाउ ऑल माय फोन पे अकाउंट्स और गूगल पे अकाउंट्स आर लिंक्ड टू दैट, सो हाँ व्हाट शुड बी ओके. डन नाउ? हाँ, so maintain that account, ओके. continue with that account. हम्म. एंड जो यहाँ पे जो कैलकुलेशन से आता है आपका पैसा, दैट शुड बी ट्रांसफर टू योर पर्सनल अकाउंट एवरी मंथ. ओके. हाँ, सो आपका ऑलरेडी है, यू हैव दैट कार्ड मशीन एंड ऑल दैट. कार्ड मशीन डू हम्म. रिक्वायर करंट अकाउंट, या. सेविंग अकाउंट पे वो नहीं मिलता है. नहीं नहीं. हाँ, तो it is okay. So if you have card and you have all that systems already in place, there is no need to close that account and start saving हम्म. account. It is not advisable. So just maintain that account. ओके. However, make sure that unnecessary lot of balance is not there in your current account. ओके. Okay, transfer into liquid funds, ओके. right? And one more suggestion, when you invest your personal funds also, क्या हुआ? When you invest your personal funds also, 50% of that amount should go into liquid funds, because there is a possibility that in between you may require that funds. Can you able to see my screen? यस. Acha, I could not able to see my screen. What happened? Okay, any other question? Sir, Yes, yes, please. this is Dr. Prajakta here. Yes, yes. I haven't opened yet my clinic. So to start with, then how should we proceed with the I didn't get account? what you said. I don't have my clinic yet, Acha, but I will open it soon. So to start with, then what accounts should we go for? Like current account we will need only, right? Then current if we account want to is have not necessary. machine. See, current account is not necessary, but if you want to have that card payment facility, because Google payment facility, phone pay facility is available on a savings account also. If you want to have that card facility, then you may have to have that current account. If you are not going for that, there is no need to have a separate current account unless and until it is compulsory. Till that, please don't open current account. You can have two separate savings account. One account you have to keep it only for clinic, no personal usage of that account and no personal expenses from that account, and keep a separate your personal account. And whenever require any money from your for your personal purpose, transfer money from current clinic account to personal account and then spend. So as you are starting that, you can have a two savings account, and you can actually earmark, one is for clinic and one is for self, and use it. Okay, I hope I answered your question. Sir, are you sharing these sheets, whatever you have made in group? I mean, Yeah, I will give you separately for everyone. I will create a customized sheet for every one of you. Okay, sir. You have to tell me these two things. One is your lab fees, Yeah. proportion, variable expenses ka, and you have to tell me what are your consultant charges. So I will create a sheet and I will send it to you. I'm going to Okay, sir. I want to send it to every one of you. Okay, sir. Yeah. Okay. Yes, sir. Yes. Any other question? The specific benefits of current accounts. Current account, the
the biggest benefit of current account for you as a consultant is you can deposit cash. If you deposit cash in savings account on daily basis, you may have to pay some charges for deposition of that savings account. So for that cash. For current account, there is no any charges on that. However, the bigger benefit is to bank, is for bank, because bank get all your money to use without any interest. They make more money out of your money. So unless and until it is not required, unless and until it is not compulsory, you should not have a current account. If you don't have any cash nowadays in city area, the cash transaction had gone down drastically. Earlier, you used to have good amount of cash. Now, almost everything is almost 90% transfer into online payments. So if this is the case, there is no need to you to have a current account. As a professional entity, you can maintain savings account only. If your 90% is online, 90% comes in directly into your account by the way of cash, by the way of check or Google Pay or Pay, whatever it may be. The bigger benefit is to bank, not to you. Okay. Okay, then I hope that there is no question onto this. So just contact me. Yes, Dr. Ashwini. Directly ask. There is no need to say that. Directly you can ask. So इतना बड़ा group नहीं है अपना. So actually, normally what happen in my clinic, most of the time 80% flow is from cash only. So the whole money I take at home. So मतलब कैसे उसको differentiate करेगा? Okay. तो आपका करंट अकाउंट घर में है इसका मतलब. So the current account and all is there, all the things. फिर भी only 20% is in account and 80% with me only. So I take all the money at home. So उसको differentiate, actually it's very difficult to differentiate that. तो क्या करना चाहती हो? Do you want to continue with this same confusion, or do you want to reduce that confusion or clear this confusion? So I want to clear this confusion. हाँ. So you have to maintain your current account and deposit all cash into current account. Okay. Maintain that. Okay. हाँ, लेकिन in this thing one thing may happen, that you may have to pay little bit higher taxes, income tax, because right now out of 100 rupees you are just showing 20 rupees as your income, right? Okay. When it comes to taxes. Correct. Right? So now other 80% is going to come. So your liability towards income tax will go up in this scenario. And it is recommended in that way only, so that you can build up your file, you can build up your cash flows, you can build up your financial strength. So anytime if you require any type of funding, it is available for you. And cash, there are means earlier it used to happen that you may able to generate able to actually absorb cash somewhere. Now there is no any chance of investing cash anywhere, and it would be at loss in long term. So it is always advisable to you have to keep all your money in direct bank account. So always transfer that amount, that cash, into your current account and pay all bills from your current account only. So current account will start showing transactions. Okay. And as a professional, I know you already have an advantage. I think you already know that, and your CA is doing that in that way. As a professional, you can directly file your return as a 50% profit. No question asked. Right?
So whenever you are taking money and transactions, you are showing any collection for an example, but I don't think, yeah, for an example, your collection is 8,60,000. For a Okay. sake of calculation, we just calculate that your collection of clinic is say 50 lakh rupees a year. There is Okay. an amendment in income tax laws that no bills, nothing is required to be shown. You can directly say that my income is 25 lakh and pay taxes on that 25 lakhs only. This is called as a assumptive income, assumptive profit. And that Okay. is, and it is applicable to all of us. I also work as a consultant. I also show as a professional income, and I also directly take 50% deduction from that. And on top of that, ATC will come. On top of that, ATD will come. On top of that, ATG will come. And after that, only you have to pay the charges. So that is one more Okay. advantage what you are getting, Okay, sir. right? Okay. Okay, sir. Thank you. Okay. So I think that इसलिए छोटा ही कॉल रखा था because I know कि छोटा ही टाइम लगने वाला है इसके लिए. So you can call me and you can tell me what is your this two things, variable expenses कितना है, consultant fee कितना है. I will create your customized sheet and will send you. Okay. 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 Thanks for connecting me. And any question related to this, you can call me. I am available. Okay. Thank you. Wish you rich and happy life. Bye. Thank you, sir. Yeah.